हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग आईपीओ आइडिया फोर्ज के बारे में। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड टू नो इफ यू शुड अप्लाई फॉर दिस आईपीओ और नॉट। एंड लास्टली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर द लेटेस्ट वीडियो। About company. IdeaForge is the pioneer and the preeminent market leader in the Indian unmanned aircraft systems UAS market. ये कंपनी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम मैन्युफैक्चर करती है, मतलब ऐसे एयरक्राफ्ट जिसमें कोई पर्सन नहीं बैठ सकता, और वो हैं ड्रोन्स. It had the largest operational deployment of indigenous UAVs across India, with its own manufactured drone taking off every 5 minutes for surveillance and mapping on average. It is one of the first few companies in India to enter the UAV market. IPO dates and price band. ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 26 जून को खुलेगा और 29 जून को बंद होगा. द एलोकेशन टू एंकर इन्वेस्टर्स विल बी डन ऑन जून 23. कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड रखा है ₹638 से लेकर ₹672 पर शेयर का. फ्रेश इशू एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न्स. Company comprises fresh issuance of shares worth ₹240 crore and offer for the sale of 48.69 lakh equity shares by promoters and investors. इसकी fresh issue size 300 करोड़ रुपए से घटकर 240 करोड़ रुपए हो गई है. After IdeaForge raised ₹60 crore by issuing 8.92 lakh shares in a pre-IPO placement. करेंटली कंपनी में प्रमोटर्स की 33.97% हिस्सेदारी है और बाकी हिस्सेदारी पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास है. क्वालकॉम और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनीज ने आइडियाफोर्ज कंपनी में इन्वेस्ट किया है, और साथ ही फ्लोरिन ट्री एंटरप्राइज एलएलपी एंड सेलेस्टा कैपिटल सेकंड मॉरिशस आर द बिगेस्ट शेयर होल्डर्स इन द कंपनी, होल्डिंग 11.85% and 11.42% stakes respectively. Allotment date and listing day. The company will fix the basis of allotment on July 4th and the refunds will be initiated on July 5th. कंपनी के शेयर 7 जुलाई को NSE और BSE में लिस्ट हो सकते हैं. Well, stay tuned with blinkX for more such IPO related informations. Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.